Good morning, students. Good morning, and welcome to the legal game presented by Unacademy. I am Sarthak Sharma. I am your legal reasoning expert at this wonderful platform that makes your learning easy, effective, efficient, and interesting. I hope I am clearly audible as well as visible to all of you. I would just like to have an affirmation, and for that affirmation, I need to open the live chats. So just wait for 10 seconds till I open the live chat, and here we start. Yeah. Yes, the live chat is on my screen. So guys, thanks for joining us. I have come up with the second lecture on the law of torts, and this lecture is upon the topic strict, absolute, and vicarious liability. I hope you all. Hi, Tracey. Good morning. Good morning. So it's not evening actually. So हो सकता है miss type हो गया हो. No, don't worry. So good morning, and I am happy to see you all. I'm happy to see students at such early morning hours क्योंकि मैं जानता हूँ ये आप लोगों के सोने का समय है. But I have always reiterated this thing that Dr. APJ Abdul Kalam, the best teacher this India has ever got. उन्होंने ये बात बोली थी कि सपने वो नहीं जो सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो सोने नहीं देते. So yes, I know you all have a dream. You all have a dream college and you all have a dream to crack your target examination. So उस ड्रीम को पूरा करने के लिए जागना तो पड़ेगा. Let's start with the class. The कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट को मोर स्पेसिफिकली क्लैट एंड एलेट को लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा पसंद है. इफ यू हैव एवर सीन, यस दीपेश, सो इफ यू हैव एवर सीन द प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ द AILET और कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि लाइबिलिटी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं. रिलेटेड टू स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, इट मे बी रिलेटेड टू एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, इट मे बी रिलेटेड टू वाइकेरियस लाइबिलिटी. दीज थ्री are the most important liabilities from the law of torts that you need to have a full hold. ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके ऊपर आपका फुल कंट्रोल होना चाहिए. यू शुड हैव अ क्लैरिटी. सो जो भी क्लाउड्स हैं माइंड में, जो भी डाउट्स हैं, आई एम गोइंग टू मेक देम क्रिस्टल क्लियर till the end of this session. I promise you. Okay, so let's start. Before proceeding, I shall give you a short intro of myself to those students who do not know me. Okay, so I'm Sarthak Sharma. I am a BLLB. I'm a penultimate year law student at Faculty of Law, Jamia Millia Islamia. I have more than 2 years of teaching experience, yes. And for me, each day counts. So I will rather say that I have more than 700 days of teaching experience that are still counting. One more day is going to be added today. आज मैं एक और दिन जोड़ने वाला हूँ, and I am more than happy for it because I have always focused on this thing in my students' preparation as well as in my own journey that each day count. Okay, I have mentored more than 10,000 students. I will rather say that I have been the companion of more than 10,000 students because instead of being a teacher, I have been more of a companion in their preparation journey. मैं उनकी preparation की journey में उनका साथी ज्यादा रहा हूँ, teacher कम. All right, and yes, a lot of my companions have been the rankers in the prestigious law entrance examinations of the nation. Moving forward, students, all of you who have not joined me till now on Telegram, let me inform you that I am on Telegram as well. The link is there in the description box as well as on your screen. You can join my Telegram group क्योंकि वहां पर मैं बहुत सारा आपको homework भी दूंगा, class notes भी दूंगा, and I will clear your doubts regarding your preparation, any particular subject. Also, I will obviously share the stuff that will optimize the chances, maximize the chances of cracking your target examination. And your target examination can be the CLAT, AILET, BLAT, GMILET, SLAT. For all these examinations, I'm going to share the stuff. Now coming to the subscription part. So guys, you can subscribe to an academy as well because there are a lot of unique features of an academy जो मैं आपको अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में दिखाने वाला हूँ. अगर आपको उन यूनिक फीचर्स को सब्सक्राइब करना है, if you want, then you have to enroll to the wonderful courses of an academy, and you can enroll for either 1 month, 3 month, 6, 9, 12, 18 or 24 months. There is a hefty discount on each subscription right now. There is no cost EMI as well. Yes, for those students who want के सर लमसम में पेमेंट नहीं करनी है, इंस्टॉलमेंट्स में करनी है, there is a no cost EMI. And in addition to these discount, you can have a 10% extra discount by using the code SRT10. SRT is a short form of my name. SRT10 is the code by using which you can have an additional 10% discount.
एंड यस 1400 per month and after using the code of SRT10 वो तो उससे भी कम हो जाएगा, even less than 1400 per month. I don't think that it is a hefty sum of amount. It is actually value for money course and you should go for it. So first lecture of taught कहाँ है? It is on this channel only, Traffic. The first lecture of taught आप देख सकते हैं. It is available on this YouTube channel only. Okay, I delivered that lecture yesterday at 8 a.m. It is available in the recorded format on this channel. आप उसको देख सकते हैं. All right, these are the unique features of an academy. These six are a lot more unique features of an academy. बहुत सारे unique features हैं on the Unacademy application. They are not available on this YouTube platform. वो सिर्फ आपको Unacademy application पर ही मिलेंगे. So if you want to avail these unique features, just download the app. And a lot of features are free of cost as well. So ये मत सोचिए कि अगर पैसे देके सब्सक्रिप्शन लेना है तो ही डाउनलोड करें. You can download and use the free features as well. Just have a try over these features. Guys, the Rankers batch, it is going to be launched on 22nd of October and it's an English medium batch, a whole 2 years program in which you will be taught from the basic foundations. So you may enroll for the Rankers batch of an academy. And coming to this thing, ये मुझे सबसे अच्छी लगती है. As I say that nobody knows everything, everybody knows something. सब कुछ तो कोई नहीं जानता, लेकिन हर कोई कुछ ना कुछ तो जरूर जानता है. एंड दैट्स व्हाई द लाइव क्विज फीचर ये सिर्फ स्टूडेंट्स को क्विज में पार्टिसिपेट करने का ही मौका नहीं देता, इट ऑल्सो गिव्स द अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू होस्ट देयर ऑन क्विज. वो अपनी खुद की क्विज को होस्ट कर सकते हैं. हो सकता है दैट जैसे कि आपको कोई एक सब्जेक्ट की ऐसी नॉलेज हो जो किसी स्टूडेंट को भी, किसी टीचर को भी ना हो. सो यू कैन लॉन्च द क्विज एंड हेल्प योर फेलो मेट्स. सबका साथ सबका विकास अनअकैडमी पर जरूर हो रहा है थ्रू दिस वंडरफुल फीचर. And yes, every Saturday you can appear for the Unacademy Law Aptitude Test. It would be just like the common law admission test, 60 minutes, 60 questions, and 60 marks. You may appear for the Unacademy Law Aptitude Test every Saturday at 11 a.m. Also the weekly T20, वर्ल्ड T20 चल रहा है, यहाँ पर weekly T20 भी चल रहा है ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में प्रॉस्पेर कर सके. ऑलराइट, अ क्विक 20 मिनट रिवीजन टेस्ट फॉर योर एवरीडे प्रैक्टिस, ये हर दिन होता है. फॉर मंडे इंग्लिश, फॉर ट्यूसडे मैथमेटिक्स दैट इज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, फॉर वेडनेसडे लॉजिकल रीजनिंग, फॉर थर्सडे लीगल एप्टीट्यूड, फॉर फ्राइडे सीए एंड जीके. एंड इट इज ओपन फॉर एवरीवन. यू डू नॉट नीड टू पे. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है इसके लिए. जस्ट गो डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप एंड अपीयर फॉर इट. इट इज ओपन फॉर ऑल. All right. And then the special class features. So these are the special class features of an academy. So interactive live classes, poll learners, raise a hand, never miss a class because this bell will ring to notify you that there is a class. So these are the special class features, and special classes are also free of cost. Just download the Unacademy app and start attending the special classes. I have a lot of my special classes there. आप मेरी classes भी attend कर सकते हैं. So let's start with the class now. So I'm going to discuss strict liability, absolute liability, and vicarious liability. Out of these, जो first two हैं, strict and absolute liability, these are no fault liabilities. Now, what is a no fault liability? As you can read that there are some situations, कुछ situations ऐसी होती हैं when the person may be held liable for some harm even though he is not negligent. उसकी कोई लापरवाही नहीं थी in causing the same, or there is no intention to cause the harm. कोई इंटेंशन भी नहीं है उस हार्म को कॉज करने की. इन लाइबिलिटीज को हम क्या कहते हैं? मींस कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब एक इंसान नेग्लिजेंट नहीं था, जब उस इंसान की गलती भी नहीं थी और उसकी इंटेंशन भी नहीं थी हार्म कॉज करने की, स्टिल द पर्सन इज हेल्ड लायबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. These concepts are called no fault liability, and there are two no fault liability in the tort law. First of all, remember a crime should be intentional, and the only exception is the crimes of negligence. But tort law can be intentional as well as unintentional. A tort can be unintentional as well. These two types of liability are the strict liability. If any student faces any doubt or any confusion, just tell me in the live chat. मुझसे वो पूछ सकते हैं live chat में. I would be more than happy to answer your confusion. Okay, I would be more than happy. अगर आप कहेंगे कि सर समझ में नहीं आया दोबारा बताइए, मैं दोबारा भी बताऊंगा. All right, just inform me that whether it is clear or there is certain cloudy thing that I need to clear.
There are two types of no fault liability. The first is strict liability. Okay, and the second is first is strict liability, and the second is absolute liability. These are no fault liability क्योंकि इन दोनों में ही रॉन्ग डूअर नेग्लिजेंट नहीं है, ना ही उसकी इंटेंशन है हार्म कॉज करने की. रॉन्ग डूअर नहीं है. इन टॉर्ट लॉ द पर्सन हु कमिट्स अ टॉर्ट इज कॉल्ड टॉर्ट फीजर. The person who commits a tort is called tortfeasor. So, in no fault liability, there is no fault of the tortfeasor, as the name is itself suggesting. कोई fault नहीं है. He is not negligent. He had no intention to cause the harm, but फिर भी harm cause हो गया किसी external factor की वजह से. Okay. So in these situations, the no fault liability comes into action, and even the person is not negligent or had no intention of causing the harm, still he is liable under the law of torts, under the rule of either strict liability or absolute liability. I'm going to explain you both the concept. Strict liability तो इंग्लैंड ने दिया था और absolute liability तो tort law के jurisprudence को इंडिया का गिफ्ट है. The Indian Supreme Court has evolved the principle of absolute liability. All right, let's move forward. सबसे पहले we will discuss the rule of strict liability, that what this rule is all about. So this concept of strict liability, it evolved from the case of Rylands versus Fletcher in the year 1868. ये ये इंग्लैंड का 19th सेंचुरी का एक टॉर्ट लॉ का प्रिंसिपल है. ओके, व्हाट इज दिस? इट इज अ 19th सेंचुरी इंग्लिश लॉ प्रिंसिपल. Tort law is all is has been evolved from the English courts first of all. जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हुआ करते थे जिनको हम इंग्लिश कोर्ट्स कहते हैं आज. ओके, इंग्लिश कोर्ट से टॉर्ट लॉ इवॉल्व हुआ. आई होप यू नो दैट टॉर्ट लॉ इज फॉलोड ओनली इन द कॉमन लॉ नेशंस, नॉट इन द सिविल लॉ नेशंस. एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कॉमन लॉ नेशन एंड अ सिविल लॉ नेशन. मैं पहले भी बता चुका हूं. कॉमन लॉ नेशंस आर दोज नेशंस जहां पे कॉलोनाइजेशन रहा है. द नेशंस दैट हैव बीन अंडर द ब्रिटिश एम्पायर, like India, like Afghanistan, like Pakistan, like Bangladesh, all these are common law nations. Like Australia, like South Africa. ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे देशों पर राज किया है. उन सभी नेशंस उन सभी नेशंस को हम कहते हैं कॉमन लॉ नेशंस. कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम आप सभी ने सुना होगा, दिल्ली में भी ये हुए थे. ओके, सो कॉमनवेल्थ गेम्स वो गेम्स हैं जिनमें सिर्फ कॉमन वेल्थ ऑफ नेशंस ही पार्टिसिपेट करते हैं. ओनली दोज नेशंस दैट हैव बीन अंडर द ब्रिटिश एम्पायर. The United States of America doesn't participate in Commonwealth Games because it is a civil law nation, not a common law nation. Clear? So I hope it is clear that what are common law nations. India is a common law nation. Okay, so because India is a common law nation, that's why tort law is an inseparable part of India's law, of India's legal system. I hope you know the features of tort law. It is uncodified, means it is unwritten, and also this tort law is, it gives a negative definition. Any civil wrong which is not a breach of contract or breach of trust is a tort. ये मैं अपने फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं. So I will not repeat the things that I have taught you in my first lecture. Otherwise it would be just wastage of time. तो आप मेरा first lecture देख सकते हैं. Coming to the second lecture, this rule of strict liability was evolved, is a 19th century English principle. English law का principle है. ऑल राइट, नाउ एक जनरल डाउट भी मैं बताया. तो अब स्टूडेंट्स कहेंगे सर 1868 है तो 19th सेंचुरी कैसे? सो गाइस, एट राइट नाउ वी आर इन 21st सेंचुरी. सो जब सेंचुरी स्टार्ट होती है हम तब बोलते हैं 19th सेंचुरी स्टार्टेड फ्रॉम 1800 ऑनवर्ड्स एंड इट वुड एंड व्हेन, जब 19th सेंचुरी एक्चुअल में लग जाएगी 1900, एंड फ्रॉम 1901 ऑनवर्ड्स 20th सेंचुरी स्टार्टेड. फ्रॉम 2000 ऑनवर्ड 21st सेंचुरी स्टार्टेड. ऑल राइट. So 19th century English law principle है, which evolved in the case of Rylands versus Fletcher, the strict liability principle. And what this principle states, simply this principle says this thing, that this principle states that if any person, कोई भी इंसान brings any hazardous thing, hazardous means dangerous thing, on his land, which is likely to do mischief, जो mischief कर सकती है, if it escapes, अगर वो escape कर जाए, then the person will be answerable for the damage caused even though he was not negligent. अगर वो negligent नहीं भी था तो भी वो answerable होगा. I will give you certain illustrations and examples, but before that let's read the actual facts of Rylands versus Fletcher.
1868 में रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर केस में इंग्लिश कोर्ट्स ने क्यों एक नया प्रिंसिपल इवॉल्व किया? सी आई होप यू ऑल नो दैट देयर आर जनरल डिफेंसेस इन law of torts. There are 6 general defenses in law of torts. When I will come to that point, मैं एक अलग से सेशन लूंगा on the general defenses, then I will explain you. But just remember that there are 6 general defenses. General defenses जो हम tort law में किसी भी tort के against ले सकते हैं. All right, there are 6 general defenses. Okay, there are 6 general defenses in the tort of law. GD stands for general defenses. All right. जैसा मैंने बताया इन द लॉ ऑफ टॉर्ट्स देयर आर 6 जनरल डिफेंसेस और इन 6 जनरल डिफेंसेस को आप अगर सक्सेसफुली क्लेम 6 में से किसी भी एक जनरल डिफेंस को अगर आप सक्सेसफुली क्लेम कर दें इन द कोर्ट ऑफ लॉ देन यू वुड नॉट बी हेल्ड लायबल, यू विल एस्केप द टॉर्चरस लायबिलिटी। ऑलराइट, सो अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स देयर आर 6 जनरल डिफेंसेस। वो 6 जनरल डिफेंसेस भी मैं अभी आपको बताऊंगा, एटलीस्ट आई विल टेल यू द नेम, आई विल एक्सप्लेन इन अनदर सेशन कि वो क्या है। डिफेंसेस मींस एक्सेप्शंस, जब आप खुद को बचाते हैं। व्हाट डज डिफेंस मींस? डिफेंस मींस बचाना। सो व्हेनेवर समवन sues you in a court of law for a particular tort, for committing a particular tort, then you can claim either of the 6 defenses. अगर आप 6 में से एक भी डिफेंस को सक्सेसफुली क्लेम कर पाए कोर्ट में, then you would not be held liable in the court of law. So in what happens in Rylands versus Fletcher, जो डिफेंडेंट था उसने एक रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट कराया, ही कंस्ट्रक्टेड अ रिजर्वायर थ्रू एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ओवर हिज लैंड। अपनी जमीन के ऊपर उसने कंस्ट्रक्ट कराया एक रिजर्वायर और ओवर हिज लैंड, और व्हाट वाज द रीजन? वो अपने मिल्स को पानी देना चाहता था, टू प्रोवाइड वाटर टू हिज मिल्स। देयर वर सम ओल्ड शाफ्ट्स, कुछ ओल्ड शाफ्ट्स थे उसकी रिजर्वायर साइड पे जिस पर डिफेंडेंट ने भी ध्यान नहीं दिया और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने भी, दे फेल्ड टू ऑब्जर्व दिस थिंग। व्हेन द वाटर वाज फिल्ड विद रिजर्वायर, it burst through the shaft and flooded the plaintiff's coal mine. अब प्लेंटिफ की कोल माइन जो बिल्कुल बगल में थी, नेबर में थी, द नेबरिंग द एडजॉइनिंग लैंड, उसके पे फ्लड चला गया और उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ प्लेंटिफ को। ऑल राइट, सो हेयर द डिपेंडेंट डिड नॉट हैड एनी प्रायर नॉलेज अबाउट द शाफ्ट, नीदर ही वाज फाउंड टू बी नेग्लिजेंट। ना तो उसको पहले से नॉलेज थी कि कोई शाफ्ट है, ना ही वो नेग्लिजेंट था। However, he was held liable, फिर भी उसको liable held किया गया। How? Because a new principle evolved. अब इस केस में क्या हुआ, सिंपली मैं आपको बताता हूं। डिफेंडेंट ने अपनी लैंड पे रिजर्वायर बनाया अपने मिल्स को पानी देने के लिए। बगल वाली लैंड प्लेंटिफ की थी, वो रिजर्व, उसको पता नहीं था कि एक शाफ्ट है जिनके थ्रू वाटर उधर चला जाएगा। उन शाफ्ट्स की वजह से वो पानी प्लेंटिफ की लैंड में चला गया और प्लेंटिफ के कोल माइंस बर्बाद हो गए। प्लेंटिफ के कोल माइंस बर्बाद हुए तो प्लेंटिफ ने कोर्ट में केस कर दिया फॉर कंपेंसेशन अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स। डिफेंडेंट ने सक्सेसफुली एक डिफेंस क्लेम किया दैट इट वाज एन इनएविटेबल एक्सीडेंट। इनएविटेबल एक्सीडेंट मींस ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसको हम टाल ही नहीं सकते थे, द सिचुएशन दैट कैन नॉट बी फोरसीन। एंड कोर्ट ने भी ये बात मानी दैट द डिफेंडेंट वाज नॉट नेग्लिजेंट, वो लापरवाह नहीं था। कोई भी कॉमन प्रूडेंस का इंसान नहीं समझ सकता था कि अंडर द लैंड देयर आर शाफ्ट्स। All right. So the court said that the defendant is not negligent. So according to the present laws, the defendant is not liable, but plaintiff को compensation मिलना ही चाहिए. So court said we are evolving a new principle. It is strict liability, in which inevitable accident is not a defense. Out of these 6 defenses, एक defense minus कर दिया. Means in this rule of strict liability, there are just 5 defenses, not 6. So that's the thing the court said. The court held that the liability arose because he kept some hazardous thing on his land. The water was hazardous thing in this situation, which escaped. अब पानी escape करके plaintiff की land पर गया from his land to plaintiff's land and caused damage to him, और उसको नुकसान हुआ. In such cases, negligence has no role to play, and the defendant could not escape liability by claiming the defense of taking appropriate and proper care. यहां पर कोर्ट ने कहा कि अप्रोप्रिएट एंड प्रॉपर केयर तो ली डिफेंडेंट ने, बट स्टिल ही वुड बी लायबल irrespective of the fact that he was not negligent. So यहां से हमें from the facts of Rylands versus Fletcher, if these facts are clear, अगर आपको Rylands versus Fletcher के facts clear हैं, then we come to the essentials of strict liability. हम समझ सकते हैं that what are the essentials of strict liability. First essential is
that there shall be a dangerous thing. In Rylands versus Fletcher, the dangerous thing was the water. The second essential is वो dangerous thing escape करना जरूरी है. All right, वो dangerous thing escape की by those shafts. वो dangerous thing Rylands की लैंड से फ्लेचर की लैंड तक पहुंच गई. Okay, and there shall be non-natural use of land. By using that dangerous thing, you are doing non-natural use of land. Like जब डिफेंडेंट ने अपनी मिल्स को पानी देने के लिए वो वाटर रिजर्वायर बनवाया, दैट लैंड वाज नॉट मेंट टू बिल्ड अ वाटर रिजर्वायर, सो ही डिड नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड. जिस काम के लिए लैंड नहीं बनी है उस काम के लिए उसका यूज करना है. इफ दीज थ्री इंग्रेडिएंट्स आर फुलफिल्ड, देन इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट अ पर्सन इज नेग्लिजेंट और नॉट, उसने प्रॉपर केयर ली या नहीं ली, इस बात को इस बात से बिल्कुल कुछ फर्क नहीं पड़ता. irrespective of this fact that he took proper care, he would be held liable because it is irrelevant. negligence है या नहीं irrelevant है, proper care लिया नहीं irrelevant है. Simply if a dangerous thing escapes and that by bringing that dangerous thing the person is doing non-natural use of land, then the person would be strictly liable even if he is not negligent. मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ. I live in a residential colony. All right. अगर मैं अपने घर में एक शेर को ले आऊं, I brings a lion as a pet animal, then the lion is a dangerous thing. I'm doing non-natural use of my land because a residential area is not a house in a residential area is not meant to keep a wild animal like lion. So मैं डेंजरस थिंग लेके आया और वो डेंजरस थिंग को रखने के लिए वो लैंड नहीं बनी है. द लैंड आई एम डूइंग नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड. इफ द लॉयन एस्केप्स एंड डज डैमेज टू एनी पर्सन, देन आई वुड बी स्ट्रिक्टली लायबल. इफ द लॉयन डू नॉट एस्केप, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. मेरा पड़ोसी मेरे घर पे आया एंड पर्टिकुलर पर्सन वो एंड आई हैव नॉट इनवाइटेड हिम. कोई ट्रेसपासर आया ऐसे ही मेरे घर में और शेर ने उसको काट लिया. आई एम नॉट स्ट्रिक्टली लायबल. देयर इज अ डेंजरस थिंग, there is non-natural use of land but there is no escape नहीं है. let me give you one more example. मेरे घर में आग लग गई एंड मेरे पड़ोसी मुझे बचाने के लिए मेरे घर में एंटर हुए और वो भी आग में वो इंजर्ड हो गए. there was dangerous thing, there was non-natural use of land. घर आग लगाने के लिए नहीं होता, but the dangerous thing had not escaped. My neighbor entered my land and then he got injured. There is no escape and that's why it is not a case of strict liability. But अगर मेरे घर में आग लग गई और वो आग मेरे नेबर की लैंड तक भी पहुंच गई, then there is escape and I would be strictly liable. All right. So there shall be a dangerous thing. वो dangerous thing मैं अपनी लैंड पर लेकर आऊंगा. By bringing that dangerous thing, I am making non-natural use of land. लॉयन को हम जू में रख सकते हैं, घर में नहीं रख सकते. जू में अगर हम लॉयन को लेके आएंगे देयर इज नेचुरल यूज ऑफ लैंड, बट अगर हम रेजिडेंशियल एरिया में लेके आएंगे देयर इज नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड. जब हम एक डेंजरस थिंग को अपनी लैंड पर लाते हैं और लैंड पर वो चीज लाकर नॉन नेचुरल यूज करते हैं उस लैंड का, मींस जिस काम के लिए वो हमारी लैंड बनी नहीं है. सो इफ दैट डेंजरस थिंग्स एस्केप, देन आई वुड बी स्ट्रिक्टली लायबल अंडर द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, इवन इफ आई एम नॉट नेग्लिजेंट नहीं हूं तो भी. All these three essentials need to be fulfilled. तीनों में से एक भी missing है, then I would not be strictly liable. For example, I have a zoo. I bring the lion at zoo. The lion escapes. Okay, without my negligence. मैं negligent नहीं था और lion escape कर गया. I am not strictly liable. There is a dangerous thing. There is escape, but there is no non-natural use of land. ये नहीं हुआ. ओके इसी को मैं अगर इससे बताऊं कि मैं लॉयन को रेजिडेंशियल एरिया में ले आया और वो एस्केप नहीं किया, मेरा पड़ोसी मेरे घर पे आया और उसको लॉयन ने काट लिया. देयर इज डेंजरस थिंग, देयर इज नॉन नेचुरल, बट यहां पर एस्केप नहीं हुआ. ऑल राइट, ऑल थ्री एसेंशियल्स आर रिक्वायर्ड टू हेल्ड यू लायबल अंडर द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. These are the essentials of strict liability. Now, coming to the defenses, as I said, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में छह डिफेंसेस हैं. देयर आर 6 डिफेंसेस इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड आउट ऑफ दी 6 in Rylands versus Fletcher, defendant was successfully claiming the defense of inevitable accident. Inevitable accident means I am not negligent and I have taken proper care, but the accident that happened was inevitable. Inevitable मतलब एक ऐसी चीज जिसको रोका ही नहीं जा सकता. Okay, inevitable means even after taking proper care, even after having due attention, I cannot stop that thing. It is called inevitable accident. So the defendant was successfully claiming the defense of inevitable accident. Now what did the court did?
कोर्ट को समझ में आया कि यहाँ तो इनएविटेबल एक्सीडेंट के डिफेंस से डिफेंडेंट बच रहा है. So court evolved this principle, strict liability, in Rylands versus Fletcher. And what did the court said? The court said that आपके पास बाकी के 5 डिफेंस तो अवेलेबल हैं, but inevitable is not available. Inevitable accident is not available. Even if you are negligent, you would be liable. So let's discuss the defenses in strict liability. Plaintiffs on default. जैसा कि मैंने बताया, मेरे घर में आग लगी हुई है, मेरे पड़ोसी ने देखा, वो मेरे घर में आ गया, एंटर कर गया, उसकी खुद की गलती है, इट इज हिज ऑन फॉल्ट. If it is his own fault, he cannot claim compensation even in strict liability. Plaintiff's own fault is a general defense as and it also applies to strict liability. Another is act of God. Act of God which is called vis major. Okay. If the loss is due to act of God, for instance, वो रिजर्वायर किसी थंडरस्टॉर्म या फिर किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से फट गया होता और प्लेंटिफ की लैंड में पानी चला जाता, then also the defendant would not be liable because it was an act of God. Because it was an act of God. Clear? Moving forward. Okay, consent of the plaintiff. If the plaintiff had consent, it is known as voluntary non-fit injuria. Voluntarily, plaintiff is giving consent for the risk. अब मेरे पड़ोसी को पता है कि मेरे घर में शेर है, but he is giving the consent and he is coming in my home, irrespective. So he is giving the consent of the risk, consent of the plaintiff. Voluntary non-fit injuria. विच मीन्स एक ऐसे इंसान को कोई इंजरी नहीं पहुंचाई जा सकती जो खुद उस इंजरी के लिए कंसेंट दे रहा है. द कंसेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड. जब आप क्रिकेट मैच देखने जाते हैं तब आप ऑडियंस में जब बैठते हैं तब आप अपना इम्प्लाइड कंसेंट देते हैं कि अगर कोई बॉल आपको हिट करेगी, यू आर गिविंग एन इम्प्लाइड कंसेंट फॉर दैट रिस्क. यू कैन नॉट क्लेम डैमेजेस फ्रॉम द स्टेडियम ऑथोरिटीज कि मुझको बॉल ने हिट किया है, बिकॉज यू आर गिविंग अ वॉलंटरीली कंसेंट. द कंसेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड in means in written or in words or implied just by your action. Like in that cricket match thing, जब आप audience बनकर गए, you give an implied consent. Okay, you gives an express consent as well. आप जब भी कोई adventurous activity में जाते हैं, like river rafting in ऋषिकेश, बहुत famous है, तो आपसे एक form sign करा जाता है, एक indemnity form. What is that form? That form is the consent of the plaintiff that I am consenting to the risk involved, and it is an express consent. So whenever the plaintiff gives consent for the risk, he shall not be eligible for compensation and the defendant would not be liable. The fourth defense is act of third party or I can say independent contractor. Let me give you an example. मैंने अभी आपको घर में आग लगने वाला एग्जाम्पल दिया. ए के घर में आग लग गई, बी ए का पड़ोसी है, कुछ इंडिपेंडेंट लोग आए जिनको ए नहीं जानता, दे आर स्ट्रेंजर्स. उन स्ट्रेंजर्स ने ए के घर से आग एक लकड़ी में एक मशाल में लगाई और बी के घर में भी आग लगा दी. मींस ए के घर से बी के घर में उस डेंजरस थिंग को ट्रांसफर एक थर्ड पार्टी ने किया जिन पर ए का कोई कंट्रोल नहीं है. ऑलराइट, मेरे घर में आग लगी है, कुछ लोग आए, कुछ स्ट्रेंजर्स आए, उन्होंने मेरे घर की आग बी के घर में भी लगा दी. व्हाट इज दिस? देयर इज अ डेंजरस थिंग, देयर इज नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, बट द एस्केप इज मेड बाय अ थर्ड पार्टी, an independent contractor, a stranger, and that's why I would not be liable under the principle of strict liability. All right, and the fifth is statutory authority. Yes, अगर किसी एक्ट ऑफ लेजिस्लेशन या गवर्नमेंट के स्टैट्यूट की ऑथोरिटी के अंडर इफ यू आर डूइंग एनी वर्क एंड अंडर दैट किसी को नुकसान होता है, देन यू वुड नॉट बी लायबल. इवन द सॉवरेन फंक्शंस एज वेल, लाइक इंडियन आर्मी का मूवमेंट हो रहा है, पुलिस एनकाउंटर में, पुलिस इज इन एन एनकाउंटर, इज एंगेज्ड इन एन एनकाउंटर विद अ गैंगस्टर एंड किसी इंसान के घर में कुछ नुकसान हो गया, शीशे टूट गए, then he cannot claim the defenses under the liability, the compensation under strict liability, because statutory authority is a defense under strict liability. See, these five are general defenses and these general defenses are also available under strict liability, but there is one general defense that is not applicable, जिसको हटा दिया, that is inevitable accident. As I told you, the Drylands versus Fletcher में जो सक्सेसफुल क्लेम हुआ था, सक्सेसफुली क्लेम किया था डिफेंडेंट ने द डिफेंस ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट, बट व्हाट हैपेंड? द कोर्ट हेल्ड दैट इनएविटेबल एक्सीडेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू
this case because this case is of strict liability. And then it evolved the principle of strict liability. Inevitable accident means you are not negligent, you had taken proper care, but still वो एक्सीडेंट हो गया. आपने अपनी साइड से सारा ध्यान रखा फिर भी हो गया. इसका मतलब वो इनएविटेबल था, उसको रोका ही नहीं जा सकता था. रायलैंड वर्सेस फ्लेचर में डिफेंडेंट ने यही डिफेंस लिया कि जो शाफ्ट के थ्रू वाटर ट्रांसफर हो गया प्लेंटिफ की लैंड में एंड उसको नुकसान हुआ, उसमें मैंने आई वाज नॉट नेग्लिजेंट, आई टुक प्रॉपर केयर, बट दिस थिंग वाज इनएविटेबल. ये एक ऐसा एक्सीडेंट था जिसको नहीं रोका जा सकता था. ऑलराइट, बिकॉज द डिफेंडेंट वाज एबल टू was successfully claiming this defense. That's why कोर्ट ने कहा कि इनएविटेबल एक्सीडेंट अप्लाई ही नहीं होता. वी आर इवॉल्विंग अ न्यू प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. Clear? So there are 6 general defenses, and out of these 6 general defenses, 5 are available in strict liability. Only one is not available in the principle of strict liability. And अगर strict liability के cases नहीं है तो inevitable accident भी apply होता है. Okay, let's coming to the second no fault liability, the rule of absolute liability. As I said this thing, that absolute liability is a gift of Indian courts to the jurisprudence of tort. ये इंडियन कोर्ट्स ने इवॉल्व किया है एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल. नाउ हाउ द इंडियन कोर्ट्स हैव इवॉल्व्ड इट इवॉल्व्ड इन द केस ऑफ एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1987. दिस केस इज पॉपुलरली नोन एज द भोपाल गैस लीक केस. भोपाल गैस लीक केस में ये फॉलो हुआ एंड absolute liability for the first time was formulated, I will say, in the case of ओलियम गैस लीक केस, जो कि दिल्ली में हुआ था. श्रीराम फर्टिलाइजर्स गैस लीक केस था जिसमें काफी लोग मारे गए थे, इन्वॉल्विंग अ 30,000 लॉयर. आई विल डिस्कस द फैक्ट्स. सो इन दिस केस द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फाउंड द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इनएडिक्वेट. वो इनएडिक्वेट था. नाउ व्हाई इट वाज इनएडिक्वेट, आई विल टेल यू दिस थिंग एज वेल. एक्चुअली व्हाट हैपेंड here, here the defendants who were this Oleum, who were the Union Carbide India Limited, एक अमेरिकन कंपनी थी जिसकी सब्सिडियरी इंडिया में थी. इन भोपाल गैस लीक केस हजारों लोग मारे गए. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड दैट व्हाट इज द रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी, एंड मैं इसको आपको फैक्ट्स के साथ बताऊंगा. व्हाट हैपेंड हियर इन एमसी मेहता इज अ ग्रेट एनवायरमेंटलिस्ट एंड ही इज वेरी पॉपुलर इन फाइलिंग पीआईएल्स. उन्होंने बहुत सारी पीआईएल फाइल की है इंडिया में. इन 1987 एंड इन 1985 ऑनवर्ड्स इंडिया में दो बहुत बड़े बड़े गैस लीक्स हो गए. फर्स्ट वाज द ओलियम गैस लीक इन न्यू दिल्ली, एंड देन 1987 में तो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई, द भोपाल गैस लीक ट्रेजेडी. भोपाल गैस लीक, भोपाल गैस लीक में आई होप यू नो दैट मिथाइल आइसोसाइनेट इज वेरी पॉइजनस गैस. वो लीक हो गई थी from the Union Carbide India Private Limited. Union Carbide is an American company और उसकी इंडियन सब्सिडियरी थी भोपाल में, जिसमें से मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस लीक हो गई. What was this gas? Methyl isocyanate. It is a very poisonous gas. Then what happened? MC Mehta, who is a great environmentalist and a social worker, उन्हें लगा कि ये तो गलत हो रहा है, बिकॉज भोपाल गैस लीक में भी ये जो कंपनी थी, द डिफेंडेंट वाज यूनियन कार्बाइड, यूनियन इंडिया कार्बाइड. The name of the companies, the defendant is also important because Bhopal gas leak is a very infamous case. I will not say famous, it is infamous. It is a black lettered incident in the history of India. Union Carbide India Private Limited. It was the defendant. So in the case क्या हुआ 1987 में जब इतने सारे लोग मारे गए तो कंपेंसेशन के लिए केसेस फाइल हुए इन द सुप्रीम कोर्ट अंडर द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. सो दिस यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड सेड दैट इट वाज एक्ट ऑफ गॉड. एक्चुअली उस दिन बहुत तेज बारिश हुई थी जिसकी वजह से वो गैस लीक हो गई. So they said that it is act of God and it is a successful defense in the principle of strict liability. So we are not liable to pay any compensation. Now what did the Supreme Court did? India is a welfare state. India is a welfare state. All right. And welfare state मतलब greatest good of greatest number of people. Supreme Court justice को justice तो करना ही था.
सुप्रीम कोर्ट को पता था कि इतने सारे लोग मरे हैं, बेचारे गरीब लोग मरे हैं, उनको कंपेंसेशन मिलना जरूरी है, बट स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल इनएडिक्वेट था, बिकॉज अंडर द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी देयर आर सर्टेन डिफेंसेस, जिन डिफेंसेस को क्लेम करके यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड was escaping liability. Then what did the Supreme Court did? Supreme Court held that no, you are not strictly liable, you are absolutely liable. आप absolutely liable and you have no defense at all. In absolute liability there is no defense. See, strict liability नाम की strict है, but actual में जो strictest है वो है absolute liability, because there are no defenses in it. I will explain you that what are the essentials of absolute liability. No defenses. एक सिंपल टॉर्ट में 6 डिफेंसेस हैं, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में 5 डिफेंसेस हैं, सिर्फ एक रिड्यूस किया, बट एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में कोई डिफेंस नहीं है, पांचों के पांचों हटा दिए. सो मैथमेटिकली मैं कह सकता हूं दैट स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट लाइबिलिटी प्लस डिफेंसेस, एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इज इक्वल टू स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी माइनस डिफेंसेस. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से डिफेंसेस हटा दीजिए तो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी बनेगा. ओके, सो व्हाट इज द रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी? What did the Supreme Court finally said? The Supreme Court said that whenever a person is engaged in a hazardous activity or hazardous industry, obviously the oleum gas leak case and the Bhopal gas leak case जिन factories से हुई, factory is a hazardous industry, a chemical factory. All right, it is a hazardous industry. Whenever a person is engaged in hazardous industry and it causes harm to any other person, अगर नुकसान हुआ है किसी भी इंसान को, then he is strictly and absolutely liable to compensate all those who are affected by an accident. सुप्रीम कोर्ट ने सिंपली कहा, अगर कोई इंसान प्रॉफिट के लिए हैजार्डस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, इफ अ पर्सन इज हैज अ फैक्ट्री और उसकी वजह से किसी को भी नुकसान हुआ तो आपको कंपेंसेशन देना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिफेंसेस. देयर इज नो डिफेंस एट ऑल. ऑल राइट, भोपाल गैस लीक में सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छे से यूनियन कार्बाइड के लॉयर्स ने ये सक्सेसफुली क्लेम कर दिया था कि यहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस अवेलेबल हो रहा है. ओके, एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस अप्लाई हो रहा है. सो व्हाट द लॉयर सेड? द लॉयर सेड दैट योर लॉर्डशिप, my client is not liable to pay compensation to any of the victim because it is a perfect case of act of god, and act of god is a available defense, is a working defense in the principle of strict liability. सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़े डायलेमा में आ गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को एक तरफ नजर आ रहे थे वो हजारों लोग, वो हजारों बेगुनाह लोग जिनकी जान गई है, ओके, जो पूरी जिंदगी के लिए डिसेबल्ड हो गए हैं बॉडीली, बट एक तरफ लॉ कह रहा था कि यूनियन कार्बाइड लाइबल नहीं है क्योंकि ये तो सच में एक्ट ऑफ गॉड था, विच इज अ परफेक्ट डिफेंस इन द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. सो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस डायलेमा को कैसे सॉल्व किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो काम 1868 में इंग्लिश कोर्ट ने किया था 1987 में हम कर देते हैं. 1868 में इंग्लैंड की कोर्ट को प्लेंटिफ को कंपेंसेशन देना था, बट अंडर द प्रेजेंट लॉज वो नहीं दे पा रहे थे, तो उन्होंने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इवॉल्व कर दी जस्ट टू हेल्ड द डिफेंडेंट लाइबल. हियर ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट को पता था कि डिफेंडेंट को तो लाइबल करना ही पड़ेगा. द डिफेंडेंट शुड बी लाइबल टू पे कंपेंसेशन. यूनियन कार्बाइड इंडिया हैड टू पे कंपेंसेशन, बट अंडर द प्रेजेंट लॉ they can successfully escape the liability. So in 1987 सुप्रीम कोर्ट ने कहा लेट्स रिपीट द हिस्ट्री. जो इंग्लिश कोर्ट ने किया था आज वो इंडियन कोर्ट करेगी. सुप्रीम कोर्ट सेड that we are evolving a new principle, the principle of absolute liability, and under this principle if you are engaged in a hazardous activity, जो कि आप हैं, यूनियन कार्बाइड थी, and due to that activity, due to that industry, any harm is caused to any person, को किसी भी इंसान को कोई भी नुकसान हुआ, then you are strictly and absolutely liable to compensate. आप strictly और absolutely liable हैं compensate करने के लिए, irrespective of any defense. So absolute liability came, and under this principle they were liable, क्योंकि अब कोई डिफेंस ही नहीं बचा. लॉयर क्या बोलता? यूनियन कार्बाइड का लॉयर डिफेंसेस ही तो क्लेम कर रहा था, बट सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी हैज नो डिफेंसेस, सो अब तो लॉयर के पास कुछ बोलने के लिए ही नहीं रहा. एंड हियर द यूनियन कार्बाइड in the Bhopal gas leak case was held liable. So what I can say, absolute liability is equal to strict liability minus defenses. Strict liability से भी defenses हटा दीजिए तो वो absolute liability है.
It is clear. I hope it is clear. Here you have no doubts. So it is the rule of absolute liability. Now, as I said, the rule of absolute liability is an evolution. Good morning, Sakshi. कोई बात नहीं. The class would be available in recorded format as well, so you can see it. So the rule of absolute liability, as I said, it is an evolution of the Indian Apex Court. It is an evolution of the Indian Supreme Court. How? So in these cases say I refer to the oleum gas leak case and to the Bhopal gas leak case. 1985 में oleum gas leak हुई थी from श्रीराम fertilizers. श्रीराम fertilizers की एक फैक्ट्री थी इन न्यू दिल्ली जहां से ओलियम गैस लीक हुई थी एंड अ लॉट ऑफ पीपल डाइड एंड देन इन 1987 भोपाल गैस लीक हो गया. मतलब 2 साल में दो बड़े इंसिडेंट्स हो गए ऐसे एंड दैट्स व्हाई एमसी मेहता केम अप विद दिस पीआईएल. So it was a big concern that if we apply this 19th century principle of strict liability, then both the companies will easily use the exception given in these rules. वो exceptions को means defenses को use करके liability को escape कर रहे थे. In 1985 श्रीराम फर्टिलाइजर्स, in 1987 यूनियन कार्बाइड, ये दोनों ही डिफेंसेस को क्लेम करके लाइबिलिटी से बच रहे थे. बट सुप्रीम कोर्ट जानता था कि कंपेंसेशन प्रोवाइड करना जरूरी है. सो व्हाट डिड द कोर्ट डिड? द कोर्ट टुक अ बोल्ड डिसीजन and they hold that we will not follow this old rule of strict liability. हम strict liability का पुराना रूल फॉलो नहीं करेंगे and according to the current social, economic and political conditions, it evolved a new law that is rule of absolute liability that I have already explained to you कि ये क्या है. This rule expressly declares that it was not subject to any exception, means there are no defenses available. No defenses. Whether there is act of God, whether there is inevitable accident, whether there is a statutory authority, whether देयर इज एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है. अगर आप हैजार्डस एक्टिविटी कर रहे हैं, मत मीन्स फैक्ट्री इज ऑब्वियसली अ हैजार्डस इंडस्ट्री. अगर आप हैजार्डस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं, द फर्स्ट एसेंशियल इज हैजार्डस इंडस्ट्री. हैजार्डस मीन्स डेंजरस एंड ड्यू फॉर प्रॉफिट मेकिंग. हैजार्डस इंडस्ट्री भी फॉर प्रॉफिट होना चाहिए. ओके, ऑब्वियसली श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड यूनियन कार्बाइड प्रॉफिट के लिए थे. एंड इफ देयर इज एनी हार्म टू एनी पर्सन, then you are liable, irrespective of any defense, irrespective there is act of God, irrespective of the fact that the plaintiff is at fault, voluntary non-fit injuria, कुछ भी अप्लाई नहीं होगा. If there is an hazardous industry, hazardous activity for profit making, and there is any harm to any person, then the person would be absolutely liable. अभी recently absolute liability apply हुई है in विशाखापट्टनम gas leak. Recently there has been a gas leak in विशाखापट्टनम. I hope you read newspaper, तो आपको पता है. In that Vishakhapatnam gas leak, the court again applied the principle of absolute liability and held the defendant liable. Okay, so strict liability minus defenses is equal to absolute liability. जब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से डिफेंसेस निकाल दिए तो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी बन गई. और उसकी जरूरत क्यों पड़ी ये मैं आपको बता चुका हूं. 2 साल में दो ऐसे इंसिडेंट्स हो गए कि सुप्रीम कोर्ट को लगा कि अब एक नया प्रिंसिपल लाना पड़ेगा. These company are doing harm and then they are claiming the defenses and they are escaping the liability. It is not there. Okay, it is not good. So that's why under the absolute liability, भोपाल गैस लीक में hundreds of करोड़ का कंपेंसेशन पे किया था यूनियन कार्बाइड इंडिया ने to the victims and their family. All right, so it is the principle of absolute liability. Coming to the third one, vicarious liability. Now, vicarious liability is not a no fault liability. Okay, it is not a no fault liability. What is it? A vicarious liability is a principle of joint liability. Now, what do you mean by joint liability? What do you mean by joint liability? जब दो या दो से ज्यादा लोग जॉइंटली लाइबल होते हैं एक सिंगल इंसान के रॉन्गफुल एक्ट के लिए. जॉइंट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल लॉ ऑफ क्राइम्स में भी फॉलो होता है एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी फॉलो होता है. राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स. सो vicarious liability is a principle of joint liability. Joint liability simply means when two or more persons are jointly liable for one single wrong. किसी एक ने wrong किया है लेकिन liable सारे हैं. So vicarious liability evolved from this legal maxim. Qui facet per alium facet per se, which means he who does an act through another, he who does an act
through another is deemed in law to do it himself. क्लियर व्हाट आई मेंट विद इट? एक इंसान जो खुद कोई एक्ट ना करके, कोई रॉन्गफुल एक्ट ना करके किसी दूसरे के हाथों कराता है, माना जाता है कानून में कि वो उसने खुद किया है. He who does an act through another is deemed in law to do it himself. But there shall be certain relationships. Tort law में, in tort law there shall be certain relationships जो fulfill होनी जरूरी है. Then only the principle of vicarious liability would apply. Okay, so the relationships are, first of all, as I said, a person is liable for his own acts, but sometimes एक इंसान अपने acts के लिए तो liable है ही, but sometimes the liability of one person arises due to the act of another person. However, it is necessary that there shall be certain kind of relationships. I'm going to discuss those relationships between them, and the wrongful act, remember it is also important, should be connected with that relationship. Means the wrongful act should be there in the course of employment. I will give you a lot of examples as well to make it clear for all of you. ताकि आप आगे principal facts के जब question solve करें. So what are those relationships? First of all, let's discuss. The first is the principal and agent relationship. Principal and agent relationship. Like I called LIC and मैंने LIC से कहा कि I want to purchase your policy, तो आप प्लीज अपने किसी एजेंट को घर पर भेज दीजिए. LIC sends an agent. उस एजेंट ने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया. He defrauded me. Okay, not only the agent is liable, LIC is also liable because the agent is not working in his personal capacity. मैं उस एजेंट को पे इसलिए भरोसा नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसका नाम राम श्याम या कुछ और है. मैं उस एजेंट पे इसलिए भरोसा कर रहा हूं क्योंकि वो LIC का एजेंट है. I am not interacting with him when he is in his personal capacity. He is in his course of employment. He is working as an agent of LIC. So LIC would also be liable. A principal is liable for the works of his agent. A principal is liable for the wrongful act of his agent. Okay, but as I said, it should be in course of employment. And remember, a principal is liable for the torts, not crime. अब वो LIC का एजेंट आया और उसने आके मुझे मेरा मर्डर कर दिया. Then would the LIC be liable under tort law under vicarious liability? No. The agent would be prosecuted for murder then. So remember, it applies only in tort law for torts, not for crimes. This thing is also important. Students बहुत ज्यादा confused रहते हैं और इसमें गलती करके आते हैं in examinations. So the first relation is principal and agent. A principal is liable for the wrongful act of his, for the wrongful tort of his agent done in the course of employment. Similarly, a master and servant, a master is liable for the wrongful act of his servant done in the course of employment. एक मालिक अपने नौकर के wrongful act के लिए liable है जो course of employment में हुआ है. Like A is the master of B. A ने B को कहा कि बाजार जाकर सब्जी लेकर आओ. Okay, when he was going to purchase the vegetables by driving the car, तो फिर वहां पर किसी का एक्सीडेंट हो गया. Someone was little bit injured and it is a case of tort. So not only the servant, सिर्फ ड्राइवर लाइबल नहीं होगा, even the master would be liable under the principle of vicarious liability. क्योंकि यहां पर सर्वेंट मास्टर के लिए काम कर रहा है. सिंपली वाइकरेस लाइबिलिटी का मोटिव है कि जब एक इंसान खुद काम ना करके दूसरे के हाथों कोई काम कराता है, देन ऑल्सो दैट पर्सन वुड बी लाइबल. ऑलराइट, बट अगर ये सर्वेंट वहां पर गया और सर्वेंट को अपना कोई फ्रेंड मिल गया, कोई वहां पे उसका पर्सनल रिलेशन है, उसने फ्रेंड को कार में बिठाया, कार का एक्सीडेंट हुआ और फ्रेंड इंजर्ड हो गया, देन उसका फ्रेंड मास्टर को लाइबल नहीं कर सकता इन कोर्ट. Why? Because the servant here was not in his course of employment, he was in his personal capacity. So you need to differentiate between course of employment and personal capacity. मैं आपको अपना ही एग्जांपल देता हूं. राइट नाउ आई एम टीचिंग यू एज एन एजुकेटर ऑफ अन अकेडमी. आई एम इन माय कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. आई एम रिप्रेजेंटिंग अन अकेडमी. यहां पर मैं कुछ भी गलत करता हूं, देन नॉट ओनली मी वुड बी लाइबल, इवन अन अकेडमी वुड बी वाइकरेसली लाइबल. बट इन माय पर्सनल कैपेसिटी, इफ समवन कॉल्स मी ऑन माय पर्सनल नंबर और मैं उससे बात कर रहा हूं, then I am in my personal capacity. My employer would not be liable. So the third relation is partners in a partnership firm. एक पार्टनरशिप फर्म को रिप्रेजेंट करते हुए अगर कोई भी एक पार्टनर गलत, कोई भी रॉन्गफुल टॉर्ट करेगा, then all the partners would be jointly liable.
ऑल राइट, ऑल द पार्टनर्स वुड बी जॉइंटली लायबल। फॉर इंस्टेंस देयर इज अ पार्टनरशिप फर्म, उसमें 4 पार्टनर्स हैं, उनमें से एक पार्टनर किसी के साथ फ्रॉड कर देता है, ओके, या फिर कुछ भी पर्टिकुलर टॉट कमिट कर देता है in a business meeting in which he is representing the partnership firm. He is not in his personal capacity. He is representing the partnership firm. He is in his capacity as a partner of the firm. Then all the partners would be jointly liable. Clear? And the fourth relation is employer and employee relationship. What is it? Employer and employee. As I said, an employer is liable for the torts committed by his employee in the course of employment. देखो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स यही कंफ्यूज करते हैं, मैं बार बार कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज आई नो यू will be confused in these two things and you need to be clear in this thing that what is a course of employment and what is a personal capacity, and that's why मैं आपको एक और बहुत easy example देता हूं। टेक माय एग्जांपल, मैं मेरे एक पड़ोसी हैं जो बैंक में एम्प्लॉय हैं, ऑल राइट, आई हैव अ नेबर हु इज, फॉर इंस्टेंस मैं उनका नाम, फॉर इंस्टेंस हिज नेम इज मिस्टर श्याम। देयर इज अ नेबर मिस्टर श्याम, ही इज एम्प्लॉय इन अ बैंक, उसी बैंक में मेरा अकाउंट है। आई वांट कि मुझे 10,000 रुपीज डिपॉजिट करने हैं अपने अकाउंट में, सो आई थॉट कि मिस्टर श्याम तो रोज बैंक जाते ही हैं, तो मैं क्यों जाऊं, मैं उन्हीं को 10,000 रुपीज दे देता हूं एंड ही विल जस्ट डिपॉजिट द मनी इन द बैंक। मिस्टर श्याम को मैंने 10,000 रुपीज दिए और वो 10,000 रुपीज लेकर भाग गए, उन्होंने बैंक में सबमिट नहीं किए। कैन आई sue द बैंक? इफ यू कैन answer this question correctly, then the course of employment and personal capacity thing is clear to you. Can I sue the bank for this? No, no. Because when I interacted with Mr. Sham, he was in his personal capacity. मैंने उनको 10,000 क्यों दिए? क्या इसलिए दिए कि ये क्यों क्यों वो बैंक के एम्प्लॉय हैं? नहीं, मैंने उनको 10,000 इसलिए दिए क्योंकि वो मेरे नेबर हैं। I believed him in his personal capacity. I do not give 10,000 rupees because he is an employee of the bank. I gave him 10,000 rupees because he was my neighbor. So all right, he was in his personal capacity. But वहीं पे अगर मैं बैंक को कॉल करूं और मैं बैंक से ये बात बोलूं कि I want to deposit 10,000 rupees and I cannot come to your office, I cannot come to your branch, तो आप प्लीज अपने किसी एम्प्लॉय को भेज दीजिए जो मुझसे 10,000 रुपीज पिकअप कर लेगा। द बैंक सेज यस, और बैंक ने अपना एक एम्प्लॉय मेरे घर भेजा मुझसे 10,000 रुपीज लेने के लिए, मैंने उस एम्प्लॉय को 10,000 रुपीज दिए एंड वो 10,000 रुपीज लेकर भाग गया। नाउ आई कैन sue द बैंक बिकॉज हियर आई डिड नॉट न्यू दैट पर्सन, वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में नहीं था। आई गिव 10,000 रुपीज टू हिम बिकॉज ही वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ द बैंक, he was working as an employee of the bank. All right, so here there is employer and employee relationship, there is course of employment, so the bank would be vicariously liable here in the second illustration. All right, सो रिमेंबर, ये पूरा वाइकेरियस लायबिलिटी का खेल कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पर्सनल कैपेसिटी का ही है। जहां भी एक इंसान, जहां भी मैं सार्थक शर्मा के रूप में काम करूंगा वो मेरी पर्सनल कैपेसिटी है, और जहां पे मैं अनअकैडमी के एजुकेटर के रूप में काम करूंगा वो मेरी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट द एम्प्लॉयर, द मास्टर एंड द प्रिंसिपल वुड बी लायबल फॉर द टॉर्ट्स ऑफ द एजेंट, सर्वेंट, एम्प्लॉय एज वेल, ओके, and all the partners in a partnership firm. So it is the principle of vicarious liability, a principle of joint liability where one person or more than one persons are liable for the wrongful act for the tort of other person. But there shall be certain relationships, this thing, and there shall be course of employment. So guys, with this I come to the end of this class. I hope strict liability, absolute liability and vicarious liability इन तीनों का concept अब आपको clear हो गया है. I thank you for being a patient student, a patient listener, and I hope this class was not just a wastage of time, but you learned something, कुछ सीखा है. If you learned something, then we are going to come up with a lot of sessions in future as well. So you can subscribe to this channel, hit the bell icon ताकि आपको पता लगता रहे कि कब हमारी classes हो रही हैं. You can like and share this class if it is worth like and sharing. And yes, PDF की बात करें, so you can download the PDFs of the notes from the Unacademy application. आप Unacademy का ऐप डाउनलोड करें, वहां पर जितनी भी क्लासेस हैं उन सभी का PDF भी अवेलेबल होगा to you, yes, for revision purpose. So you can download from there. With this, let's end the session, guys. Bye bye and have a great